Today's enlightening entertainment will be presented in Urdu and English, with subtitles in Arabic, Auxese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Urdu and Thai. मुमताज़ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम बसीरत भरी तफरी में खुश आमदीद। आज हम सफ़र करेंगे शुमाल मगरबी पाकिस्तान में वाक़े कोहिस्तान के दिलकश इलाके का। कोहिस्तान, जिसका मतलब पहाड़ों की सरजमीन है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का एक अनोखा ज़िला है। ये अपने खूबसूरत पहाड़ों और सबसब जंगलात की वजह से जाना जाता है। अजीम दरिया सिंध कोहिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करता है। इसका मशरक़ी हिस्सा सिंधी कोहिस्तान कहलाता है, जबकि मगरबी हिस्सा सवात का कोहिस्तान कहलाता है। इस इलाके के साथ साथ कराक्रम हाईवे भी चलता है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंची तामीर शुदा बैनुल-अक़वामी सड़क है, जो कि 4693 मीटर की बुलंदी तक जाती है। ये सड़क इन कदीम रास्तों में से एक की निशानदेही करती है, जो पाकिस्तान और चीन को जोड़ता और तिजारत के लिए इस्तेमाल होता है। कोहिस्तान के मुकाम पर हिंदुकश, कराक्रम और हिमालय के पहाड़ी सिलसिले मिल जाते हैं। अपने बेहतरीन नबाताती और हैवानियाती माहौल के साथ कोहिस्तान घर है नायाब अनवा का, जैसा कि मगरबी ट्रागोपान तीतर और बर्फानी चीता। कोहिस्तान के लोग सादा और पुरमसरत ज़िंदगी गुजारते हैं। वो अपने मेहमानों का पुरतपाब इस्तकबाल करते हैं। कोहिस्तान लेख मासमान हानक बेस बुट से शुक्रिया अदा थोन सदी कयोनगी बेस से शुक्रिया थोन शियादिक हयोनगी से शुक्रिया यहाँ बे खुशहाल आनस सो इंशाल्लाह असुसे ताउन थुई। आइए अब मुलाकात करते हैं जनाब तालिब जान से, जो डायरेक्टर हैं सिंधी मुआशरती बहबूद और तरक्याती इदारे के, जो कि हमें कोहिस्तान के बारे में मज़ीद बताएंगे। Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most merciful and mighty, on behalf of Kohistani community in these mountains, I'm thankful to SupremeMasterTV.com for providing me this opportunity to say something about Kohistan, its people, its history and its culture. Kohistan has an area of 7,492 square kilometers, and it has an elevation of between 2,000 to 5,000 meters. The people of Kohistan have their own specific culture, their own history, but unfortunately Kohistani history is not recorded, and that's why the history of Kohistan is a mystery. Nobody can say with certainty from where these people came and when they started to live in these mountains. But what the people say about their own origin, there are two different views. The first view says that Kohistanis are the descendants of Quraysh clan in Saudi Arabia, and the second view is that Kohistanis are the people who migrated to this area from Afghanistan. Now Kohistani culture, Kohistan has a very specific culture, and it is somehow resembling with northern areas of Pakistan like Gilgit-Baltistan, but it is different from Khan's culture or the culture of different people living in the lower parts of Pakistan. One specific thing I would to mention here that is a part of the culture is the exchange marriages. And this is a word you might have not heard before. Exchange marriages are the marriages which for example, a person A gives the hands of her daughter to a person B's son, and similarly a person B gives the hands of his daughter to the son of person A. And this is the value very much profound in the area. I will also talk about the poetry of Kohistan. Kohistan has a very different sort of poetry, because a poet must be a singer. And the second important thing is that in Kohistani poetry, almost all of the poets and the singers, they are illiterate. So
the poet must be a singer. A couple of languages are spoken in the area like Indo-Koistani, Shina, Bateri, and also Pashto. So now I will ask my friend Mr. Zia. He will sing a song in Indo-Koistani language, and hopefully I will translate it. Ye bajga khapa ho gole minara ga sa phondo bajga khapa ho gole o bajga khapa ho gole minara ga sa phondo bajga khapa ho gole begona nere khap kanra mata qsim chelano mijil mati bajewan ti soda me kane oyan chugul chugul karan yen taroshta ho gole o bajga khapa ho gole Minara sa phondo bajga khapa ho gole Chogli karata tige nibai divar pero me baje manata tige Aistala tu sagande mige ni tirazi tine ek sa joda ho gole O bajga khapa ho gole ni tirazi tine ek sa joda ho gole O bajga khapa ho gole Minara sa phondo bajga khapa ho gole Invite Mr. Hassan Khan. His mother tongue is Shina, so he will sing a song in Shina language. Ho muqaidi hanu susne kala o maja bastoy didan lukamos dua o maja mon besakun hanu samshaw sanam toy mohabbate saza o maja Yar motakam to nusha samane yuni jina hanturne shiri har vashgayu majina tani gamar bagyas marzi wa yar manos marum sukuni jina She dunya tade tamasha sani tuziyar Moshe dunya tade tamasha sani tuziyar Basto game gini bhaja sani tuziyar Toy soli sanan tamasha magini Mobile gasha sani tuziyar Hai tu jagod khushi mi kirya saza bilina Toyar mane rota khrish buda bilina Tura qasad bayar sur tajmiro Mi kirya kharisa bilina In Koistani culture, we have another very much important aspect. The people do have very great respect to the guests, and people are very much hospitable. This culture, it is the least exposed culture in the world, because in Pakistan this is the 110th district in the north, and we are very much away, bounded inside the mountains, and very few researches have been carried out about the history and culture of this area. Shina is the very much established language. By the grace of Almighty Allah, we have been succeeded to devise an orthography system, writing system for Indo-Koistani language. And we don't have very documented proof of Koistani culture like music, musical instruments, the poetry, and handicrafts, and the other very much specific tools. But we have a plan ahead to document the Koistani culture and Indo-Koistani cultural segments and to share it with other world. Let me talk about a little bit about the living style of the people and their livelihood. Majority of population live in the valleys, very beautiful valleys, where people have agricultural lands. In agriculture, people have two crops like maize, corn, and wheat. These are the two crops people grow in a year, and people mostly live on upper elevations with houses made of mud and stones, and very few people have concrete houses having cement and concrete. During the summers, people migrate from lower elevations to upper elevations because of the seasonal extremes. Because in the lower regions we have during the summer very warm weather, and people cannot tolerate that, and people have the least resources than during the summer, so they migrate to the upper elevations. मकई और गंदम के अलावा यहाँ चावल, लोबिया, आलू
और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। इलाके में मौजूद कई नदियां फसलों के सैराब करने के लिए पानी मुहैया करती हैं। जनाब तालिब जानी और गांव के एक लड़के ने हमें कोहिस्तानी नाच का एक नमूना भी दिखाया। बजेगा खपा हो गले वो बजेगा खपा हो गले मेरा गसा फोड़ो बजेगा खपा हो गले वो बजेगा खपा हो गले मेरा गसा फोड़ो बजेगा खपा हो गले वो बजेगा खपा हो गले मेरा गसा फोड़ो बजेगा खपा हो गले वो बजेगा खपा हो मेरे तकदीर जा लड़ गए वो बसोदा मेरे तकदीर जा लड़ गए बसोदा मेरे तकदीर जा लड़ गए वो बसोदा मेरे हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब तालिब जान और कोहिस्तान के दासू कस्बे के रहायशियों का कि उन्होंने कोहिस्तान की तहजीब से हमें मुतारफ़ करवाया। दुआ है कि जन्नत की बरकत से आपकी सरजमीन के खुलूस भरे लोग अमन में ज़िंदगी गुजारें। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। आगे आ रहा है हिकमत की बातें प्रोग्राम देखने के लिए फौरी बात काबिल गौर खबरों के सुप्रीम मास्टर टेलीविज़न पर। दुआ है कि आपका दिल मसरत और आज़ादी से भर जाए। Thank you esteemed viewers for joining us today. Coming up next is our words of wisdom after noteworthy news here on Supreme Master Television. May your heart be filled with joy and freedom. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.